the webinar on gender equality and women rights. Gender equality is not only a fundamental human right, but a necessary foundation for a peaceful, prosperous, and sustainable world. The objective of this is to hold government accountable for their commitments like equal access to education, expanding women's economic opportunities, and reducing the burden of unpaid works. First and foremost, may I request Honorable Vice Chancellor Professor M.K. Verma sir to kindly address the webinar with your kind words of wisdom. Please, sir. It's a matter of great pleasure for me to be here in this webinar, which is having its own importance as far as the humanity is concerned. We all are looking upon the humanism into two genders, and whenever we see the social customs, we find a lot of differentiation, discriminations are there. It is by virtue of some historical reasons may be there, but you know that human society is constantly progressing, and in the progressive world, at present condition, we realized that what power, what capacity the counterpart of gender is having. And nowadays it is a established fact that any work can be done. It is independent of gender. And we are looking upon all these achievements, particularly of our female counterparts. They are serving each and every area, aspect, facet of life, science and technology, social, or whatever the facet we are going to look upon, we find that men and women both are equally competent enough, and rather than many places, we find that females are performing far better. And this is what we are aiming at for a progressive society where we wish to see that everybody is having all equal rights, at the same time freedom to work, freedom to express, and holding the equal rights in all aspects of life, whether it is social, whether it is economical front, whether it is any matter which is socially important, and for development of country, whether it is technology, whatever it is the field. We wish to see that everybody is capable, everybody should have an opportunity to express their capability, and it's really matter of pleasure for me and everybody that we are belonging to that era where we are getting this evidences. Whatever I am saying, we are having all the examples with us in all aspects of life, technology, engineering, medical, whatever the field we can say. Everywhere we are finding females are there. They are doing excellently. And one very quite obvious fact, which has now been stabilized in the society, whenever we come across any board examination, their results, whenever we come across any performance in the examinations, competitive examinations, or anywhere we find out of 10 merit list, at least 6 to 7 females are dominating. Particularly board examinations, CBSE examination, ICSE examination, any examination you are talking about, you look upon the fact and figure, we find that our girls are performing far better than the boys. This is what the hidden energy we do have till now unutilized. And this is the era where a little bit resistance from the social customs, some of the society's social customs are there. But another aspect of technology which pleases me, that this is the era of fast communication, information technology, and we find
that because of this communication, fast communication, the orthodox feeling, thoughts, customs of the society are getting demolished, and that is what is needed. So it is the time, it is the era where we are talking about gender equality and women's right. I am happy that this is the subject which has been chosen for this particular webinar is of much more importance for mankind, for society, where we are focusing different societies, different peoples towards the fact what we were missing and how capable our counterparts are there. That's why gender equality and women's right, this we are going to learn a lot, different aspect by their own experience, their thoughts. We are going to receive and hear from our experts. I am happy and would like to welcome Dr. Aruna Palta Madam. She is herself example. She is serving as Honorable Vice Chancellor of Hemchand Yadav Vishwavidyalaya Durg. Also, I am pleased to welcome Dr. Priyamvada Srivastav. She is serving as Associate Director, Central Center of Women Study in Pandit Ravi Shankar University, Raipur. So this is how many examples are there. Even though some social evils are there, these evils are to be removed, and this can be removed only by the educating our women, educating our male, and somewhere we have to demolish the male chauvinism which is prevailing and which is a very important obstacle as far as today's subject is there, that we will have to think over it, we will have to discuss over it, and we will have to exchange our thoughts in a very progressive manner. Then only we can come and we can see that this equality concept and rights we can achieve. And that is all the objective of the society. And for this objective, from this university, we are also one of the part who are taking parts in this type of thoughts, which is having its own social importance and contribution from our university and our team. I would like to congratulate them to choose this particular topic, which is very, very relevant. Still a lot is to be done over there. Psychology, thinking, mental attitude about these subjects is still to be refined by large in the society. And that is how it is a matter of great pleasure for me that our all CSVTU university, their faculty, their students, they are participating and they are contributing to this great social cause, great social dream, which I suppose that is come to true in next decade definitely. I wish all the participants that they will be getting some stuff for their thought, for their discussion, for their deliberation, and definitely this particular webinar, seminar will be making them enable to proliferate, to share these thoughts of equality, and it will be contributing towards an ideal society and its development. Thank you very much. Thank you so much, sir, for enlightening us. Thank you so much, sir, for enlightening us with your kind words of wisdom. Thank you so much. May I request Dr. Aruna Palta ma'am, Honorable Vice Chancellor of Hemchand Yadav Vishwavidyalaya Durg, to kindly address the webinar. Please, ma'am.
A very good afternoon to one and all present in this webinar. At the outset, I would like to thank the organizers for giving me this platform to talk on a topic which is definitely very, very close to my heart. And it is always a pleasure talking to the academia. A lot has always been said about the women's right and gender equality. But we all sail in the same boat and we all live in the same society. And we know all the realities at ground level. And we also know about the status of women in our society. May it be a rural woman, may it be a tribal woman, or may it be an urban modern lady. May it be a housewife, or a better word I would like to say for a housewife is housemaker, or may it be a working woman, may it be an educated lady, or may it be an uneducated lady. Everyone knows that all the ladies, they are bestowed with triple burden nowadays they are bearing nowadays of household activities, of child rearing, which I think has become a very, very difficult task nowadays. And lastly, they are going for economic activities also, as they are gainfully engaged in a number of jobs nowadays. So ladies, they are like bestowed with all triple burden in the society. So I would be speaking on gender discrimination rather than gender equality. So I'll start my presentation. So today I'll be speaking on gender discrimination, harassment, and violence. I would like to say that women in India lives under under discrimination. A woman before marriage is under the control of her father and brother, and she becomes completely subordinated to her husband after marriage, and her son takes over her custody if she becomes a widow. This is her life cycle. When we talk about gender equality, we should think that it is not the equality of outcomes for men and women, but rather equality in the determinants of these outcomes. That is equality in opportunities or resources, rights and voice. Talking about the sex ratio in our country, in India, there has been a steady decline of sex ratio from 972 in 1901 to 933 females per 1,000 males in 2001. This shows the status of women in our society. This ratio has improved a little bit in 2011 with 940 females per 1,000 males. Sex ratios for children under age 10 became more masculine all across India. नहीं हो रहा? So I was talking about the, I'm very sorry that I could not share my PPT earlier. So in India, there has been a steady decline of sex ratio from 972 in 1901 to 933 females per 1,000 males in 2001. This shows the status of women in our society. And I want to tell you that the status again in 2020 has declined.
Now there are 924 females per 1,000 males. All right. Now we should think about it. Why in India sons are preferred over daughters? There are a number of reasons for that. People think that sons, they are going to give financial support. Next, they think sons to be their security for their old age. Next, they think that there should be a person who should inherit their properties. So for property inheritance also, sons are considered to be superior than daughters. Daughters, definitely, sometimes they are ignored in the family. They are not given proper, whatever their requirements, because people think that the girl has to be given dowry later on. For family lineage, in Hindu Sanskriti, it is always said that a son is required always to keep the family lineage going on. Some people, they think that their prestige and power increases with the sons. In our culture, birth and death rituals, for birth and death rituals also, sons are preferred over daughters. And lastly, for doing all the religious duties and for salvation or moksha also, people say that there should be a son in the family. So due to all these reasons, women and girls are accorded lower status in Indian society. Now, gender inequalities prevail in work, in education, in allocation of food in the families. This may have changed over the years, but I would like to share with you that even now, if you go to a rural family, there the boys are fed better than the girls. Even the housewife always eats in the end, and whatever is left is being used by her. Even if you go for healthcare, women are always inferior than males, and this inequality also prevail in fertility choices. It is the male in the family who decides how many children we should have. Unless and until a son is born, the female has to keep on giving birth to further children. I would talk about nutritional stress also. Being a person of nutrition science, I always like to share something on the nutritional stress of the women also. You see in this, there is a vicious cycle which is going on. There is a malnourished, pregnant and lactating women in the family. Malnourished lady is there who has become pregnant. She gives birth to a low birth weight baby. Because she is malnourished, she is giving birth to a low birth weight baby. That low birth weight baby later on is converted into a malnourished girl child. Because due to inequalities in the family, she is not being fed well. And this malnourished girl child later on becomes a malnourished adolescent girl. And this adolescent girl, when is married and becomes pregnant, again gives birth to a low birth weight baby. So this vicious cycle keeps on going. And we have to break this vicious cycle. And that can be done only if there is a thought in the family that we have to feed the girl better than a boy. Because that girl is going to become a future mother and she is going to give birth to a healthy child. So this vicious cycle has to be broken in between just by changing our thoughts. Now I'll talk about gender-based violence. Violence against women and girls, they not only include the physical violence, they also include the psychological violence, which generally ladies, they face in the family, psychological violence. Then sexual violence, and definitely economic abuse also. It is often known as all these violences, physical, sexual, psychological, and economic. They are known as gender-based violence, and it evolves in part from women's subordinate status in society. And this is the reason why
women, they are considered at second level in the society. Now I'll be talking about sexual violence. Sexual violence by non-partners. They refer to violence by a relative, a friend, any acquaintance, your neighbor, your work colleague, or even stranger. And it is estimated that 1 in 5 women will become a victim of rape or attempted rape in her lifetime. And this is the reason why women should stand up and they should speak out to end sexual violence. Now, different types of violences. Domestic violence, I think every lady is facing domestic violence at home. It's not necessarily physical violence, maybe a psychological one also, maybe an economical one. Rape, even child marriage also I consider as a violence. Male preference over female children. Forced prostitution. Murders for dowry. Sexual assault. Molestation. आप देखते हैं छेड़छाड़ होती है, लड़कियां रोड पे निकलती हैं, छेड़छाड़ होती है, molestation, that is also a form of violence. Dowry deaths and women trafficking, तस्करी हो रही है महिलाओं की. अब देखिए पंजाब से कितनी लेडीज जो होती हैं, उनकी ट्रैफिकिंग होती है, sent to different countries, they are sent to Dubai, they are sent to USA. So women trafficking is also a form of violence against women. There are some interesting facts. 40% of women experience violence by age of 15, any type of violence. 29% of all women have experienced physical assault. 17% of all women have experienced sexual assault. And 38% of girls in the age group of 10 to 12 have experienced unwanted sex. I'll be discussing some laws made against sexual harassment, which I think every Indian should know about. There are 20 laws against sexual harassment, and I think not only the ladies of the society, but more I think the male counterparts, they should know about these laws. As women living in India, all have fallen prey to sexual harassment in one form or another. Be it the cat calls on the road, cat calls is सीटी बजाना, or molestation in a crowded bus, छेड़छाड़ जो buses में होती है. We all have been there, we all have faced it. But how many of us know that the Indian penal from each one of these? So I'll be telling you about the laws now, which the IPC has made for the women. And there should be an awareness for these laws to everybody, male as well as females. Did you know singing lewd songs, dirty songs, directed at women in public spaces is considered sexual harassment under IPC section 294. And the offender could be jailed up to 3 months or could be fined also, or both. So this is one thing which everybody should know. Did you know following someone with or without their knowledge is stalking, पीछा करना, लड़कियों का पीछा करना, and is an act of sexual harassment. The men can face jail term ranging from 3 to 5 years, coupled with a fine as per IPC section 354D. One should know about it. Did you know if a woman's clear refusal to someone's sexual advances is met by threats to harm her physically or her reputation and property, it is a crime under IPC section 503. The men can either face jail time of 2 years or fine or both. Now, what you always see in MMS
and different types of WhatsApp. Did you know watching, capturing, or sharing images of a woman engaging in any private act without her consent is voyeurism, and it is punishable under IPC section 354C. And again, the man can have a jail for 1 to 3 years in addition to the fine. And if he does it for the second time, then the jail term will increase from 3 to 7 years. Did you know that a senior colleague demanding sexual favors in exchange for work benefits like promotion or salary hike is an act of sexual harassment as per the Act of 2013. Did you know that morphing pictures of a woman and sharing them with an intent to harass and defame her is a crime as per IPC section 499, and again a jail imprisonment of 2 years. Do you know that demanding sexual favors despite indication of disinterest by the women is a crime under IPC section 354A? Again, imprisonment for 1 to 3 years or fine or both. Posting any obscene or defamatory material, bad material, on a public online platform intending to harass a woman is a crime under section 67 of the IPC Act. Now, not only that, making sexually colored remarks against a woman in a public place. बहुत बार सुनना होगा, लड़कियों के लिए बहुत खराब रिमार्क्स होते हैं पब्लिक प्लेसेस पे. It is a crime under IPC section 503, and again the person can be imprisoned for 3 years. Did you know abusing a woman with sexually colored remarks on social media? That was public place. Again, on social media, if she is being abused with sexually colored remarks, then that is considered as a crime under IPC section 509. Now, making unwanted physical contact against a woman's will is a crime under IPC section 354A. All of you remember that one very sad incident happened in a transportation facility in a bus. So if an act of sexual harassment happens inside the transportation facility provided by your workplace, you have the right to complain under Sexual Harassment of Women at Workplace Act 2013. Now we come to domestic workers also. All the female workers who are working at a workplace, that is a workplace for them. And your domestic health is also covered by Sexual Harassment of Women at Workplace Act 2013, because your home is her workplace of your maid. So she will also be considered under this act. There is one advice from the government or from this act that at any workplace with more than 10 employees should have an internal complaint committee constituted. There should be one ICC or internal complaint committee as per the Sexual Harassment of Women at Workplace Act 2013. In an event that you are faced with an act of sexual harassment, you have the right to file a FIR, that is first information report, preferably with the local police station. An FIR is basically a complaint document and the first step of the criminal process. So FIR is a must. If you have been sexually harassed and decided to file an FIR, ask for the statement to be recorded in a language that you understand. If that is not possible, make sure that the statement is translated and explained to you by the officer recording it. Insist on every detail being recorded.
If you have been sexually harassed, filing an FIR immediately is recommended because you will be able to remember more details about the incident. According to this Act of 2013, the committee may take action against the complainant in case of malicious complaints or false evidence. I want to tell you that sometimes women taking advantage of this act, they sometimes like go for malicious complaints also, false complaints also. So you have to prove there. However, simply not being able to prove an allegation will not mean that this is a false complaint. If a woman makes a complaint about an act of sexual harassment, the inquiry has to be completed within 90 days, according to this act. Now, Supreme Court has made Vishakha guidelines for the safety of women. And there are 10 important key features of Vishakha guidelines. We'll be discussing them in very brief. And this law applies to women, not only in the workplace, all the domestic works, daily wages, temporary workers, full-time workers, part-time workers. The law is applicable to women and only women, maybe any woman. Now, sexual harassment means physical contact or advances, a demand or request for sexual favors, making sexually colored remarks, showing bad videos or pornography, any other unwelcome verbal or non-verbal conduct of sexual nature. The act of harassment can occur in the workplace, and also if the woman is harassed while visiting a place during the course of her work, including transportation. The Act requires all workplaces to set up internal complaint committees. I've very well discussed it earlier. We call it LCC or Local Complaint Committee. And this aggrieved women, this sufferer women can file a complaint within 3 months of the incidents. And if the committee permits, even later. The Act also provides the option of settlement between the lady and the complainant, but not at the cost of compensation of money. It is, the inquiry has to be completed within 90 days. And if the report seems to be malicious or false, then the women will not be charged anything because simply because she won't be able to prove the allegation. That doesn't mean that she will be like punished for it. The identity of the aggrieved women will never be disclosed publicly. And lastly, the Act also hopes to prevent such incidences by placing a duty on the employer to hold regular awareness programs, as your university is doing right now, to hold regular awareness programs as well as display the consequences of harassment in the workplace. So every employer has a duty to provide a safe working environment to all the employees. But it was observed by Honorable Supreme Court that all the guidelines made by them are not followed properly at the workplaces. So a new act came into being in 2013, which was known as Workplace Sexual Harassment of Women at Workplace Act 2013. Because this act, it went one step forward. And they have defined that all type of women will be considered in it. And they have given a pattern of how to form the internal complaint committee. So any employer should make an internal complaint committee with a presiding officer, with not less than 2 members from amongst the employees, 1 member from amongst non-government organizations or associations,
which are committed to the cause of women. And in order to ensure participation of women employees in this committee, the Act says that at least one half of the members of the ICC should be women only. A local complaint committee is also made most of the time in the collectorate or the district headquarter, because sometimes that the complaint of the women is against the presiding officer only, the employer only. She wants to complain about the employer only. She's being sexually harassed by the employer. So she's not able to file her complaint in LCC. At that time, at ICC, she's not able to file her complaint in internal complaint committee. So for those reasons, there is a local complaint committee also in every district, and they can receive this sexual harassment cases. And sometimes where there are less than 10 workers and there is no ICC in any workplace, then directly women can go to LCC and complain, file her complaint. What is the procedure of the complaint? She can make a written complaint of sexual harassment to the ICC or the LCC within a period of 3 months from the date of incidents. And if the aggrieved woman is unable to make complaint in writing, she can take assistance from other people and she can make her complaint written by somebody else, and she can send it to the ICC or the LCC. In case the aggrieved woman is unable to make a complaint on account of her physical incapacity, a complaint may be filed inter alia by her relative or her friend or her co-worker or an officer of the National Commission for Women or State Women's Commission. Anybody can file a complaint for her. Now, after so many laws and so many very crude talks which I had with you, there was a survey which was done on 558 people with multiple responses. And they were asked what suggestions you would like to give to stop violence against women. The maximum respondent, they say, use law enforcement authority.
Am I audible now? So, sorry for the obstruction, unavoidable situation due to electricity problem. So a survey was done and suggestions were taken from 558 people on multiple responses on how to stop violence against women. So most of the respondents, maybe about 50% people, they said the law should be enforced against them because they are not going to listen. They don't have moral for that. Then the second highest marks were public enlightenment, which your university is doing right now. Public enlightenment should be there for stopping violence against women. Male education. That's why I always say in such type of webinars, the male participants should always be there. They should listen to such webinars. So male education and awareness regarding all these laws is a must. Then people also suggested that we should use religious leaders also to tell about it. And some people, they talked about women empowerment. Female empowerment is also one of the answers to stop violence against women. And lastly, school or work-based education should be given to them. So this was an interesting result of the survey which was done. Next. So some of the ladies, they want to say that we would like to choose a man who has the courage to treat me like a woman only. And the problem of violence against women is so widespread in the society, not only in Indian society, it is widespread globally. All the developing countries, developed countries, all the civilized countries, they are facing the same problem. So that's why they have decided one day, that is 25th of November. Every year, 25th of November is dedicated to this violence against women, which they in short form call it as WAW, VAW, 25th November, and they celebrate it as a white ribbon day, just for a brainstorming and just for reminder to the male counterparts that they should not go for such violence against women. So we need a world, that lady is saying that we need a world which values all women's work and all women's lives. So this is a carry home message for all the beautiful ladies who have attended this webinar. To reduce your risk, you have to be alert, you have to be assertive, and you have to be prepared also. Thanks a lot for patient listening. And once again, thanking CSVTU for giving me this opportunity to share my views with you all. Jai Hind, Jai Bharat, Jai Chhattisgarh. Thank you so much, ma'am, for such an informative session and for gracing us this webinar. We feel honored and privileged to have you among us. Thank you so much, ma'am. Same here. Thank you, ma'am. Now, may I request Dr. Priyamvada Srivastav, Associate Director, Center of Women Studies, Pandit Ravi Shankar Shukla University, Raipur, to kindly address the webinar. Please, ma'am. Okay. Good afternoon to one and all present in the webinar. I am very much thankful to the CSVTU University for organizing such a webinar on gender equality and human rights, and calling me for to give some
inputs regarding the gender equality. So may I share my PowerPoint presentation? This one is here. Is it visible? Yes, ma'am. Okay, all right. So I have chosen this topic. Not chosen, I have been given this topic. Gender equality and human rights. It's very, very much need of the hour, and for any society, it is always needed, gender equality. And for that purpose, we need to know about the human rights also. So it's a talk by me, Professor Priyamvada Srivastava. Basically, I am a man of psychology, but also associated with the Center for Women's Studies, Pandit Ravi Shankar Shukla University, Raipur. This talk will cover what is difference between sex and gender, what is gender discrimination, what is gender equality, what is SDG 5 and women rights. With this, I'll start first. What is sex and gender? Actually, what we think that both these terms are almost same. It is just making difference between male and female. In our even in our studies also, what we try to write about sex difference or gender difference, but what is that? Sex is very much biological. You are born with. You have got certain anatomy and reproductive system with secondary sex characteristics. This denotes to sex of an individual. One is born with that particular sex. What is gender? Gender is basically it is a type of social roles given to the sex, particular sex. किसी भी मेल या फीमेल के लिए कुछ रोल्स निर्धारित कर दिए हैं, and that is the that term is very much related to gender. So in short, we can say sex is biological and gender is social. Here we can see the difference that sex is biological. It is by birth only, and it cannot be changed. For example, women can give birth and men can impregnate. So हम ये कह सकते हैं कि भाई जो जिस सेक्स में पैदा हुआ है उसकी कुछ कुछ बातें हैं जो परिवर्तित नहीं की जा सकती. It cannot be changed. But gender is cultural, social. It can be learned through socialization. Therefore it can be changed. हम ये कह सकते हैं कि भाई जो सोशलाइजेशन हुआ है तो हमने सीखा है सोशलाइजेशन के थ्रू, तो हम इसको चेंज भी कर सकते हैं. For example, women and men can work as teachers, engineers, laborers. Women and men can take care of children and the elderly. अब आप ये देख सकते हैं कोई भी काम कोई भी कर सकता है, लेकिन आप ये सोचिए कि जब हम बात करते हैं कि जेंडर या मेल या फीमेल की, तो मैं कुछ क्वेश्चंस आपके सामने रखती हूँ कि जैसे कि कलर, पिंक कलर किसके लिए ज्यादा उपयुक्त आपके मन में दिमाग में आता है कि कौन पिंक कलर का इस्तेमाल ज्यादा करता है. और खाना बनाना कौन? फीमेल्स. किसानी का काम कौन? मेल्स. सो आप सभी ये सब बात जानते हैं कि कुछ ऐसे रोल्स किसी एक पर्टिकुलर सेक्स के लिए निर्धारित कर दिए जाते हैं जो समाज के द्वारा दिए जाते हैं, और यहीं से डिस्क्रिमिनेशन शुरू होता है. What is gender discrimination? Gender discrimination is unequal or disadvantageous treatment of an individual or group of individual based on gender. Gender पे आधारित होकर जब हम किसी को differentiate करते हैं तब वहां पर gender discrimination उत्पन्न होता है. नहीं आप ये ही चीज कर सकते हैं. उदाहरण के लिए लड़कों को रोना मना है, पब्लिकली रो नहीं सकते. Why?
लोगों ने बहुत मजाक बनाया इंडियन साइंटिस्ट का जब वो फेलियर हुआ था और वो गले लग करके रोए थे मोदी जी को। क्यों भाई, क्या ये सिर्फ रोने का जो निर्धारण है वो सिर्फ महिलाओं के लिए है? Here the gender discrimination occurs. So society has given certain norms. भाई आपको ये करना है, आपको ये करना है. That's why there is a difference. Sexual harassment is a form of illegal gender discrimination. अभी आपने you just learnt about the sexual harassment and violence against women. You have heard from Palta madam. It was a very knowledgeable lecture from her side, and you may have learned a lot of things for your help also. So this is very important. You can see this figure. You can see where this gender discrimination occurs. You can find that he is the male and is given a path, provided a path by the society, and he moves on. Whereas the female has to create her own path. Here the gender discrimination occurs. You can find here, both male and female have got same career goal. But for a woman, you will find a lot of hurdles to attain her career goal, whereas a male has got a smooth path. Here you can see the same thing happens. A lot many hurdles are there, and the man has got a smooth path, very clean road for his career achievement. In workplace also, you can find here that there is a wage discrimination for male and females. That is also created in the society. For the same type of work, when you get differentiated wages, then there is a problem. So, अब जेंडर डिस्क्रिमिनेशन के कारण क्या हो सकते हैं? हमको तो बहुत बेसिक लेवल पे समझना पड़ेगा कि जेंडर डिस्क्रिमिनेशन होता क्यों है, हमने क्यों इतनी इनइक्वालिटी दिख रही है, क्यों एक पर्टिकुलर सेक्स बहुत पावरफुल फील करता है और दूसरा सेक्स जो है बहुत कम पावरफुल अपने आप को वीक फील करता है. द मोस्ट प्रोमिनेंट फॉर्म्स ऑफ जेंडर बायस आर stereotype thinking about the nature and roles of women and men. मैंने अभी आपको बताया कि सोशलाइजेशन प्रक्रिया ऐसी है. The process of socialization makes a schema in the minds of the people that they are for the such type of work. So here occurs the differences. Here occurs the gender bias. जैसा मैडम ने कहा कि बहुत सारे जगह पे खाने पीने में भी फर्क किया जाता है, रहन सहन में भी फर्क किया जाता है, एजुकेशन में भी फर्क किया जाता है. तो ये सब स्टीरियोटाइप थिंकिंग है क्योंकि आपका समाज एक पैतृक व्यवस्था वाला समाज है. पेट्रियार्की इज आल्सो देयर. सो यू कैन सी कि यही चीजें चली आ रही हैं जनरेशन टू जनरेशन एंड वी एक्ट अकॉर्डिंगली. डिवैल्यूइंग व्हाट्स परसीव्ड एज वुमेन्स वर्क. अब महिलाओं के कार्य को डिवैल्यू किया जाता है, उनका अमूल्य तरीके से बातचीत की जाती है. कहा जाता है कि भाई स्त्रियोचित कार्य जो है बहुत महत्वपूर्ण नहीं होते हैं और ये बहुत मजाक का विषय बनते हैं कि यदि कोई चीज स्त्रियोचित तरीके से काम होता है तो लोग इसको मजाक बनाते हैं, उसको वैल्यू नहीं करते हैं. क्योंकि वुमेन बीइंग वुमेन is it means that one is weak. एक वुमेन को एक कमजोर दर्जा मिलता है सोसाइटी में, ऐसा इस कारण से डिस्क्रिमिनेशन अपीयर होता है. Lack of knowledge of social and economic realities of women and men's lives. अभी ये भी नहीं पता है कि किसको कितनी जरूरत है समाज में आर्थिक रूप से खड़े होने की और क्या डिफरेंसेस इन्होंने क्रिएट कर रखे हैं जिसके कारण ये जेंडर डिस्क्रिमिनेशन उत्पन्न होता है. मैं आपको एक इकोलॉजिकल मॉडल बताती हूँ कि क्या रीजंस हैं, व्हाट आर द रीजंस व्हाई देयर इज अ जेंडर इक्वालिटी. दैट इज सोसाइटी, community, relationship and individual. We can say that from micro to macro level ये इकोलॉजिकल मॉडल है जो आपके जेंडर डिस्क्रिमिनेशन का आधार बताता है.
हम ये देखते हैं कि यदि हम मैक्रो से चलें, सोसाइटी के अपने कल्चरल नॉर्म्स होते हैं, उन्होंने अपनी कुछ अवधारणाएं बना रखी हैं और उसमें हमको फिट होना है। तो सोसाइटी इज वन component which is responsible for discrimination, creating discrimination among gender and as well as community। जैसे कि बात हो रही थी कि हम अपने जो कम्युनिटी के जो नॉर्म्स होते हैं उसके अनुसार भी हमको अबाइड करना पड़ता है और अकॉर्डिंगली हम उस डिस्क्रिमिनेशन के शिकार होते चलते हैं। अब जैसे कि मैडम ने बताया कि मेल एंड फीमेल रेशियो जो दिखाई पड़ रहा है उसमें कमी आ रही है और बहुत सारे ऐसे फीमेल फेटिसाइड्स भी हुए हैं। आप देखिए हरियाणा जैसे जगह में, ऑल ओवर इंडिया में आप देखिए पुत्रों के जन्म को बहुत ज्यादा लोग मान्यता देते हैं, पुत्रियों के जन्म को लोग बहुत ज्यादा प्रेफर नहीं करते हैं। उसके बहुत सारे ऐसे कारण होते हैं जो कल्चरल और सोशल कारणों से जुड़े हुए होते हैं। दहेज एक प्रथा है, बाकी वीकनेस कि हमारा जो परिवार में यदि लड़कियां ही हैं तो हमारे परिवार को कौन चलाएगा, या अपने आप को एक वीक फील करते हैं। तो ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है सोसाइटी के नॉर्म्स के कारण। कम्युनिटी अपने आप में एक नॉर्म्स को तैयार करती है और कहती है कि हमारे कम्युनिटी का ये कारण है जिसके कारण हम इस प्रकार के विभेदन को या डिस्क्रिमिनेशन को रखते हैं। रिलेशनशिप्स, यदि आप देखिए कि एक डाइवोर्सी हो या फिर सिंगल मदर है या फिर ऐसे लोग हैं तो जिनको समाज की नजर में सही ढंग से देखा नहीं जा रहा है, तो रिलेशनशिप भी एक डिस्क्रिमिनेशन। जैसे ही एक महिला अकेले होती है तो उसके ऊपर अनेक प्रकार की बातों को कहा जाता है, वो अपने आप को सामाजिक रूप से आइसोलेटेड फील करना शुरू करती है। तो ये सब सारी चीजें भी रिस्पॉन्सिबल फैक्टर हैं आपके जेंडर डिस्क्रिमिनेशन में, वायलेंस में, एक्सेट्रा। इंडिविजुअल, हम खुद कहीं ना कहीं एक कारण है डिस्क्रिमिनेशन के। ये जो हमने एक एंटिटी अपनी बना ली है, एक वीक एंटिटी, जैसा मैडम का कहना है कि हमको बहुत सारा ऐसी चीजों को जानकारी होना है, उस पर एक्शन लेना है, एक असर्टिव वे अडॉप्ट करना है, अपने आप को इस तरीके से सामने लाना है। तो ये सारी चीजें जो हैं, यदि हम खुद को डेवलप नहीं करते हैं, हम खुद को एक्सेप्ट नहीं करते साइकोलॉजिकली, I am a woman and I am an entity in the society. Without me, the society is incomplete. If I say like this, then no one can bully me. No one can harass me. This thing should come up from the individual itself. अब दूसरी चीज देख लीजिए, एक और स्लाइड जो है वो उसी बात को कहती है कि कैसे जेंडर बायसेस उत्पन्न होते हैं, जिसमें कौन कौन से ऐसे कंपोनेंट्स हैं जो रिस्पॉन्सिबल है। तो जो पिछली स्लाइड हमने दिखाई कि जो इकोलॉजिकल मॉडल है वो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन को कैसे प्रोड्यूस करता है। सिमिलरली वी हैव गॉट एट माइक्रो लेवल आइडेंटिटीज, जनरलाइजेशन, स्टीरियोटाइप्स एंड बायसेस। मैं कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स आपके पास रखना चाहती हूँ, कैसे वुमेन देयर इज जेंडर इनइक्वालिटी। देखिए, वुमेन विथ फुल टाइम जॉब्स still earn only about 77% of their male counterparts earning. Wages में भी differences हैं मेल और फीमेल के। 62 million girls are denied an education all over the world. 62 मिलियन लड़कियों को एजुकेशन नहीं मिलती है, ग्लोबली मैं बात कर रही हूँ। At least 1000 honor killing occur in India and Pakistan annually. It's a fact. These are the facts and figures. 1 in 3 women have experienced physical or sexual violence at some point in their life. जिंदगी में आप देखें 3 में से 1 महिला प्रताड़ित हुई है, ऐसा पाया गया है। 28 लड़कियों को हर मिनट शादी कर दी जाती है, जबकि वो तैयार नहीं है शादी के लिए, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से तैयार नहीं है, फिर भी उनको मैरिज कर दिया जाता है। लेकिन दोस्तों, बात ये है कि जेंडर इक्वालिटी की बात करनी है। हम ये कह सकते हैं कि वुमेन एंड गर्ल्स रिप्रेजेंट हाफ ऑफ द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन। महिलाएं
और लड़कियां आपके वर्ल्ड पॉपुलेशन की आधी आबादी हैं, और इस आधी आबादी की अपनी पोटेंशियल्स हैं, अपनी क्षमताएं हैं, और हम इन क्षमताओं का पूरा उपयोग करें तो सोसाइटी बहुत अच्छी बनेगी, कंट्री का विकास होगा. सो जेंडर इक्वालिटी बिसाइड्स बीइंग फंडामेंटल ह्यूमन राइट is essential to achieve peaceful society with full human potential, sustainable development. Moreover, it has been shown that empowering women spurs productivity and economic growth. मैं ये कहती हूँ कि यदि हम वुमेन को एम्पावर कर दें, उनकी पोटेंशियलिटीज को लाएं बाहर, सोसाइटी में कंट्रीब्यूशन करने का मौका दें, तो देखिए कि सोसाइटी कैसे ग्रो करती है, नेशन का विकास कितना अधिक होता है. उदाहरण के लिए मैं आपको बताऊं, न्यूजीलैंड की जो प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने किस कदर अपनी क्षमता का उपयोग करते हुए अपने देश को विकास के राह पर चला दिया है. और अभी ताइवान की का भी एग्जांपल लीजिए, वहां की प्रेसिडेंट ने कोविड-19 जैसे महामारी को कंट्रोल किया है इफेक्टिवली. So we can say women, if given opportunity, can show their achievements. अब आइए बात करें कि जेंडर इक्वालिटी अराउंड द वर्ल्ड किन किन आयामों में, किन किन डायमेंशंस पर दिखाई पड़ती है. तो आप देखिए, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल लेवल पर देयर आर अ लॉट ऑफ डिफरेंसेस. सामाजिक रूप से देखें तो उसमें हम देखते हैं देयर आर 3 थिंग्स which are to be taken care of: health, education, sexual and gender based violence. हेल्थ में आप देखें, स्वास्थ्य सबके लिए बहुत जरूरी है. महिलाओं के लिए स्वास्थ्य बहुत आवश्यक है, क्योंकि मैटरनल हेल्थ इज वेरी इंपॉर्टेंट. तो इसकी अवेयरनेस, इसकी फैसिलिटीज इतनी कम है कि महिलाएं अपनी उस हेल्थ को बरकरार नहीं रख पाती. आप देखिए, मैडम ने जैसा बताया कि अंडरवेट होती हैं, एनीमिक होती हैं और सारी चीजें होती हैं. तो उसके कारण जो उनकी जो बच्चे होते हैं वे भी वीक होते हैं, तो पूरी जनरेशन उससे गड़बड़ होती है. आप एजुकेशन देखिए, एजुकेशन में भी मैंने एक स्टडी की थी, उसमें ये पाया था कि बहुत सारी लड़कियां एजुकेशन जब ले रही होती हैं तो प्राइमरी स्कूल तक पढ़ पाती है, उसके बाद ड्रॉप आउट हो जाती हैं. इसके पीछे कारण क्या हुआ कि उनकी जरूरत उनके घर पे है, उनकी जरूरत उनके घर पे है, घर पे संभालना है, सारी चीजें हैं. तो ये जो डिफरेंसेस हैं कि उनको ग्रो करने का अपॉर्चुनिटी नहीं है, जो एजुकेशन होना चाहिए वो अपॉर्चुनिटी नहीं है. डिस्क्रिमिनेशन की और बात करूं, एजुकेशन में भी डिस्क्रिमिनेशन बहुत होता है. आप देखिए कि इंजीनियरिंग कॉलेजेस और बहुत सारी ऐसी जगह पे जहाँ पे ये कहा जाता है मैथ्स इज ओनली द फोर्टे ऑफ मेल स्टूडेंट्स. लड़कियां बहुत अच्छा गणित नहीं कर सकती, साइंस में बहुत बढ़िया नहीं. दे आर नॉट फील्ड इंडिपेंडेंट, उनकी कॉग्निटिव स्टाइल फील्ड इंडिपेंडेंट नहीं होती है, ऐसा लोगों का कहना है. तो ये सारी बातें जो हैं एक डिस्क्रिमिनेशन क्रिएट करती हैं. सेक्सुअल एंड जेंडर बेस्ड वायलेंस, अभी आपने इतना काफी कुछ सुना लेक्चर के संदर्भ में, और सच में ये जो सेक्सुअल हरासमेंट है और जेंडर बेस्ड वायलेंस है, यह एक बहुत संगीन मुद्दा है समाज के लिए. क्योंकि हम देखते हैं कि पीड़ित होती हैं महिलाएं, लेकिन उनको पता नहीं है कि कहाँ जाएं, कहाँ बातचीत करें. तो गवर्नमेंट ने बहुत सारे सेंटर्स को खोला हुआ है. सखी सेंटर्स हैं, 181 सेंटर है जहाँ पे कंप्लेन की जाती है और उनको हेल्प मिलती है. और ये कहा जाता है कि ये जो FIR दर्ज हो या कम्युनिकेट किया जाए ऐसे संस्थाओं को, तो दूसरे लोग भी कर सकते हैं. इफ देयर इज अ वायलेंस, फिजिकल वायलेंस हो रही है, तो ऐसे लोगों को जाकर के कंप्लेन किया जा सकता है और एक्शन भी होता है. इकोनॉमिक फ्रंट पे यदि आप देखिए तो अनपेड वर्कर्स, अनपेड केयर बर्डन्स, अभी आप देखिए कि बहुत सारे ऐसे काम हैं जो महिलाओं को उसकी पेमेंट नहीं मिलती है, दे डोंट कंसीडर, और उनके वेजेस भी बहुत कम है.
पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं के वेजेस कम है। फॉर्मल एंड इनफॉर्मल मार्केट्स में भी आप देखिए कि उनके लिए पोजीशंस कम है, उनके लिए सैलरी कम है। और इस तरीके से बातें करें कि एम्पावरमेंट होना जरूरी है, एम्पावर्ड नहीं है। उनके यदि हरासमेंट होता है तो कहाँ जाए? तो अभी आपको अवेयरनेस आई होगी कि इंटरनल कंप्लेंट कमिटी या लोकल कंप्लेंट कमिटी का निर्माण होना ही चाहिए, जहां पर हम अपनी बातों को कह सकें। पॉलिटिकल डोमेन में भी आप देखिए कि बहुत अधिक डिस्क्रिमिनेशन है। आप सभी देखिए कि पार्लियामेंट में कितनी फीमेल लीडर्स हैं, एट आवर असेंबलीज में भी देखिए कि लीडर्स, फीमेल लीडर्स की कमी है। और तो ये सारी चीजें जो हैं, ये एक क्वेश्चन मार्क करती हैं कि जेंडर इक्वालिटी बहुत ज्यादा जरूरी है इन सब बातों पे चर्चा करना। ये तो बहुत अच्छी बात है कि आप लोग ऐसे वेबिनार्स को कंडक्ट कर रहे हैं और लोगों को अवेयर कर रहे हैं कि किन बातों पे हमें चर्चा करनी चाहिए। आप देखिए कि जेंडर इक्वालिटी इंडेक्स की बात यदि करें तो ये कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जिन पर हमको फोकस करना है। इट इज द पावर, political, economical, and social. What I talked about leadership, what I talked about the family डिसीजन मेकिंग। फैमिली में भी यदि आप इंडिविजुअल लेवल पर देखिए तो हम डिसीजन मेकिंग के लिए अथॉरिटी है या नहीं है, ये भी इम्पोर्टेंट है। सो एवरीबडी शुड बी अवेयर कि मैं एम्पावर्ड हूँ टू टेक द डिसीजन, टू शेयर माय ओपिनियन, दिस इज टू बी डन। लेकिन हमारे परिवारों में ये सारी चीजें दिखती नहीं है। knowledge is important, knowledge attainment, and it is very important for segregation also, कि जिससे कि हम अपने अधिकारों, अपने पोटेंशियल्स को यूज कर सकें। यदि हमको यदि पढ़ने का मौका नहीं मिलता है तो हम उस सारी चीजों के बारे में जान नहीं पाते। वर्क, पार्टिसिपेशन ऑफ वर्क इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। एंड वायलेंस को प्रिवेंट करना है। एक जेंडर इक्वालिटी के इंडेक्स में यदि हम वायलेंस को प्रिवेंट कर पाते हैं, एब्यूजेस को प्रिवेंट कर पाते हैं, तो जेंडर इक्वालिटी होगी। हेल्थ, आई हैव टोल्ड यू दैट हेल्थ इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर वुमेन ऑल्सो। उनकी हेल्थ स्टेटस का बहुत बड़ा पैमाना होना चाहिए। बिहेवियर एंड दैट एक्सेस शुड बी देयर। देन द time is also very important. Time for activities, you can see कि हम लोग घर में भी काम करते हैं, बाहर में भी काम करते हैं, there is no limit. तो ये सारी चीजों का एक डिफाइंड वे में बातचीत हो तो जेंडर इक्वालिटी की संभावनाएं हो सकती हैं। मनी की हैंडलिंग, मनी बहुत ज्यादा यदि आप प्रैक्टिकली देखें और अपने आसपास नजर दौड़ाएं तो many women are not independent to use money in accordance to their will. अपनी इच्छा के अनुरूप महिलाएं वो सारी चीजें नहीं कर पाते। They have to be dependent on the other people, even the working ladies also. So there is a need to talk on these matters so that gender equality may be achieved. Gender equality से मतलब क्या होता है? Gender equality means that different behavior, aspirations, and needs of women and men are considered, valued, and favored equally. Gender equality से तात्पर्य यह है कि महिला और पुरुष के आकांक्षाएं, व्यवहार, आवश्यकताएं, उन सबको एक महत्वपूर्ण वैल्यू करना है ना? तो तभी हम जेंडर इक्वालिटी ला सकते हैं। It does not mean that women and men have to become the same. जेंडर इक्वालिटी, जैसे ही जेंडर इक्वालिटी की बात होती है ना तो मेन कहते हैं अरे ऐसी बातें हैं और आप लोग प्रिविलेज्ड हो। ऐसी बात नहीं है। इसका जेंडर इक्वालिटी का अर्थ ये बिल्कुल नहीं है कि हम लोग एक समान हो जाएं, है ना? लेकिन हमारे अधिकार, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, हमारे अपॉर्चुनिटीज जो हैं इनको ये हमारे सेक्स पे आधारित नहीं होना चाहिए, है ना? इट शुड बी इक्वल फॉर बोथ।
अब हम बात करें यदि यूनाइटेड नेशंस ने कहा है कि हमें बहुत लंबा अभी यात्रा करनी है ये जेंडर इक्वालिटी के संदर्भ में. Therefore, it is a paramount importance to end the multiple forms of gender violence and secure equal access to quality education, health, economic resources. मतलब हमको एक ऐसा सिस्टम तैयार करना है जिसमें एक बराबरी का हिस्सा मिल सके हर एक क्षेत्र में. It is also essential to achieve equal opportunity in access to employment and positions of leadership and decision making at all levels. अभी हमको वो अपॉर्चुनिटी कहाँ मिलते थे? बहुत सारे ऐसे सेक्टर्स थे जिसमें महिलाएं ज्वाइन नहीं कर सकती थी. अभी मिलिट्री में महिलाओं को पोजीशन मिली है, तो आप ये देख सकते हैं परिवर्तन हो रहा है, लेकिन लंबा चलना है. अभी यूनाइटेड नेशंस ने सस्टेनेबल डेवलपमेंटल गोल्स की बात कही है कि किसी देश के विकास के लिए सस्टेनेबल डेवलपमेंटल गोल्स निर्धारित किए जाने चाहिए, और उन्होंने 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंटल गोल्स की बात कही है. उन्होंने कहा कि इन सारे डेवलपमेंटल गोल्स में महिलाओं का योगदान बहुत ज्यादा है, तो हम महिलाओं को एम्पावर करें, ऐसी आवश्यकता है. जैसे उनके जो सस्टेनेबल डेवलपमेंटल गोल्स हैं ये निम्नलिखित हैं. आप देखिए कि यूनाइटेड नेशंस ने कहा कि देयर शुड बी नो पॉवर्टी, देयर शुड बी जीरो हंगर, देयर शुड बी गुड हेल्थ एंड वेल-बीइंग, quality of education must be there, and SDG goal 5 relates with the gender equality. Gender equality is must. There is clean water and sanitation and affordable clean energy. There are many. Here it is given. So you can see that every sustainable development goal requires contribution of women. So there is a need that we should make such an environment that gender equality should come up. So it is intrinsically linked to sustainable development, and it is vital to the realization of human rights for all. The overall objective of gender equality is society in which women and men enjoys the same opportunities, rights and obligations in all spheres of life. जैसा मैंने आपको पहले बताया कि जेंडर इक्वालिटी का प्रमुख उद्देश्य वही है कि आप अपने राइट्स को, अपने अवसरों को अवेल कर पा रहे हैं जिंदगी के तमाम स्फेयर्स में. अब मैं आपको बताऊं कि सस्टेनेबल डेवलपमेंटल गोल 5 जेंडर इक्वालिटी के कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं, कुछ टारगेट्स हैं. पहला टारगेट ये है कि एंड डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन एंड गर्ल्स. तो महिलाओं और लड़कियों के जो विरुद्ध में डिस्क्रिमिनेशन है उसका खात्मा करना एक टारगेट है. एलिमिनेट फोर्स्ड मैरिजेस एंड जेनाइटल म्यूटिलिएशन, मतलब कि आप फोर्स्ड मैरिजेस को बंद करिए, जेनाइटल मतलब लैंगिक जो शोषण है उसका भी बंद होना आवश्यक है. इंश्योर फुल पार्टिसिपेशन इन लीडरशिप एंड डिसीजन मेकिंग. थर्ड टारगेट ऑफ यूएन गोल इज जेंडर इक्वलिटी के संदर्भ में डिसीजन मेकिंग और लीडरशिप, ये दोनों में पार्टिसिपेशन होना ही आवश्यक है जिससे हम लोग अचीव कर सके जेंडर इक्वालिटी. इक्वल राइट्स टू इकोनॉमिक रिसोर्सेज, प्रॉपर्टी ओनरशिप एंड फाइनेंशियल सर्विसेज. आपके अधिकार, बराबर के अधिकार होने चाहिए आपके तमाम रिसोर्सेज पर, आपके प्रॉपर्टी पर, आपके फाइनेंशियल सर्विसेज पर. अडॉप्ट एंड स्ट्रेंथनिंग पॉलिसीज एंड एनफोर्सेबल लेजिस्लेशन फॉर जेंडर इक्वालिटी. आपके पास तमाम कानून होने चाहिए कि जिससे कि जेंडर इक्वालिटी हो सके. एंड ऑल वायलेंस अगेंस्ट एंड एक्सप्लॉयटेशन ऑफ वुमेन एंड गर्ल्स. महिलाओं के शोषण में कमी हो, बंद हो, रेदर.
वैल्यू अनपेड केयर एंड प्रमोट शेयर्ड डोमेस्टिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज। ये भी एक टारगेट है। देखिए, अनपेड केयर का महत्व किया जाना चाहिए और डोमेस्टिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज में भी पुरुषों की सहभागिता होनी चाहिए। यूनिवर्सल एक्सेस टू रिप्रोडक्टिव हेल्थ एंड राइट्स, ये भी बहुत आवश्यक है। और कोविड-19 के दौरान ये देखा गया है कि ह्यूमन राइट्स का वायलेशन हेल्थ के सेक्टर में बहुत दिखाई पड़ा है। जैसे सैनिटरी नैपकिन्स का जो एक मुद्दा है आजकल बहुत ज्यादा चर्चा में आता है, एंड इट शुड बी गिवन टू द फीमेल सो दैट दे कैन protect their health in these regards. Promote empowerment of women through technology. Technological advancement के साथ साथ महिलाओं को सशक्त करना पड़ेगा इस टेक्नोलॉजिकल एरा में, प्लस साथ ही साथ उनको प्रोटेक्ट भी करना पड़ेगा साइबर बुलिंग से। आजकल बहुत सारे ऐसे कंप्लेन आ रहे हैं साइबर बुलिंग के, जो महिलाओं ने काफी शिकायतें भी करी हैं, और ये सचमुच एक मुद्दा है जिस पर काफी चर्चा किया जाना चाहिए। SDG Goal 5 to achieve gender equality and empower all women and girls is known as the Stand Alone Gender Goal, because it is dedicated to achieving these ends. Deep legal and legislative changes are needed to ensure women's rights around the world. UN कहता है कि ये बहुत आवश्यक है कि कानूनी परिवर्तन होना चाहिए कि महिलाओं के अधिकारों की सुरक्षा की जा सके। While a record 143 countries guaranteed equality between men and women in their constitutions by 2014, 2014 तक 143 कंट्रीज ने गारंटी किया कि they will implement this SDG Goal 5। 52 कंट्रीज ने इस पे कोई भी स्टेप नहीं लिया। Women's rights are fundamental human rights that are enshrined by United Nations for every human being on the planet nearly 70 years ago. 70 साल पहले ही वुमेन राइट का निर्धारण हो चुका, मौलिक अधिकारों का निर्धारण यूएन ने कर दिया है। These rights include the right to live free from violence, slavery and discrimination. ये राइट्स इंक्लूड करती हैं कि आप हिंसा से, गुलामी से और डिस्क्रिमिनेशन से दूर हों। आपका राइट्स एजुकेशन के लिए, प्रॉपर्टी के लिए, और राइट टू वोट, राइट टू हैव इक्वल वेज, ये सब सारी चीजें सुनिश्चित हों कानून के द्वारा। So what are the women's rights in India? Rights in India. Women's rights under the Constitution of India mainly include equality, dignity and freedom from discrimination. इंडिया में भी women's के राइट के लिए संविधान में निर्धारण किया गया है, और जो कि उनकी इक्वलिटी, उनकी संप्रभुता और स्वतंत्रता को निर्धारित करती है। Additionally, India has various statutes governing the rights of women. भारत में बहुत सारे ऐसे नियम और कानून हैं जो महिलाओं के अधिकारों का संरक्षण करते हैं। Women in India now participate in fully in areas such as education, sports, politics, media, art and culture, service sectors, science and technology, etc. आप देखिए कि भारत की स्थिति अच्छी है महिलाओं के संदर्भ में, कह लीजिए, जहां पर हम महिलाओं का पार्टिसिपेशन बहुत सारे सेक्टर्स में दिखता है, और स्पोर्ट्स के में, एजुकेशन में, पॉलिटिक्स में भी दिख रहा है। और हमारे पास तो एक उदाहरण है इंदिरा गांधी का, जिन्होंने 15 साल तक प्राइम मिनिस्टर के रूप में, एक सक्सेसफुल प्राइम मिनिस्टर के रूप में अपने कार्य को संपादित किया। सो हम ये कह सकते हैं कि वुमेन एम्पावरमेंट इन इंडिया इज ग्रेजुअली इंक्रीजिंग। फिर भी यहाँ पर काम करने की आवश्यकता है एट ग्राउंड लेवल। देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन में इंडिया ने काफी कुछ नियम और कानून बनाए हैं
जैसे इंडिया guarantees to all Indian women equality, it is Article 14. No discrimination by state, Article 15(1). Equality of opportunity, there is Article 16. There are many articles relates with the equal work, okay. And Article 15(3), it is state in favor of women and children, renounces the practices derogatory to the dignity of women. It is Article 51, and also allows to provisions to be made by state or securing just humane conditions of work and for maternity relief. This is Article 42. So there are women's safety laws in India, and बहुत पुराने समय से ये सारी चीजें चल रही हैं. Guardians and Wards Act 1890, Indian Penal Code 1860, Christian Marriage Act 1872, Indian Evidence Act 1872, Married Women's Property Act 1874, Workmen's Compensation Act 1923, Indian Succession Act 1925, the Indecent Representation of Women Prevention Act 1986. स्पेशल ये सारी चीजें देखिए. इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन मतलब महिलाओं को गलत तरीके से प्रचार और प्रसार के लिए यूज करना, जैसे एडवर्टाइजमेंट्स वगैरह में है, उसके लिए भी एक्ट है. पर इतने सारे एक्ट होते हुए भी चीजें ऐसे ही चल रही हैं. आप देखिए, Hindu Marriage Act is there, Hindu Succession Act, a number of acts are there which are responsible. Dowry Prohibition Act is there, 1961. Commission of Sati Act 1987, all these are the acts. Child Marriage Restraint Act 19, it is still prevailing, but iska execution, implementation, I don't think it is occurring, because in our state only, हमारे छत्तीसगढ़ में भी चाइल्ड मैरिज होती है. आपका अक्षय तृतीया जो होता है उस वक्त ये स्थिति उत्पन्न होती है. इस पर हम लोगों ने कुछ एक छोटा सर्वे कराया था और ये पाया एक विशेष ब्लॉक में वहां दिखाई पड़ रहा था. तो it's still prevailing. How to take care, it is to be discussed. Code of Criminal Procedure is there. Number of Equal Remuneration का एक्ट है, इंडियन डाइवोर्स एक्ट है, मुस्लिम वुमेन एक्ट है, ठीक है, उनके प्रोटेक्शन एंड राइट्स के लिए ऑन डाइवोर्स. The Sexual Harassment of Women at Workplace Act 2013, which has been discussed in detail by Madam, and the Criminal Law Act is there, 2013, introduced charges to the Indian Penal Code making sexual harassment an expressed offense under Section 354. And the amendment also introduced new sections making acts like disturbing women without consent, stalking, and sexually acts by persons in authority. It also made acid attacks a specific offense with a punishment of not less than 10 years. So we have discussed a lot about the sexual harassment in lecture. There are 10 laws every woman should know. The Prohibition of Child Marriage Act 2006. हर एक महिला को इन laws के बारे में जानना आवश्यक है. The Prohibition of Child Marriage Act 2006, Special Marriage Act 1954, Dowry Act 1961, Indian Divorce Act, Maternity Benefit Act is also there, Medical Termination of Pregnancy Act is there, Sexual Harassment of Women at Workplace Act is there, Indecent Representation of Women, National Commission for Women Act, Equal Remuneration Act. ये सारे लॉज यदि हम अपने अधिकारों के संदर्भ में समझें तो शायद हम अपने बारे में अवेयर हो सकते हैं और अपने एक अस्मिता, अपने एक संप्रभुता को बनाए रख सकते हैं. अब हम ये बात कर सकते हैं कि द की टू जेंडर इक्वालिटी एंड वुमेन्स एम्पावरमेंट, इक्वल अपॉर्चुनिटीज फॉर ऑल. दिस इज व्हाट जेंडर इक्वालिटी इज ऑल अबाउट. हमारे जो जेंडर इक्वालिटी और वुमेन एम्पावरमेंट का सबसे बड़ा जो सूत्र हो सकता है
वह हम ये मान सकते हैं कि देयर शुड बी इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल. दिस इज व्हाट जेंडर इक्वलिटी इज अबाउट. हम सबको समान रूप से यदि अवसर देते हैं तो शायद जेंडर इक्वालिटी अपने आप हम सोसाइटी में देख पाते हैं. Society's expectations for girls and women can limit their opportunities across social, economic, and political life. Across the globe, women and girls still have lower status, fewer opportunities, and lower income, less control over resources, and less power than men and boys, and intrudes on their opportunities in education and work. It's the scenario. आपको जेंडर इक्वालिटी चाहिए तो पूरा अपॉर्चुनिटी आप दीजिए वुमेन को, लेकिन उसके संदर्भ में हम ये देखते हैं कि सोशलाइजेशन, सोसाइटी, समाज एक बाधा उत्पन्न करता है. इन्होंने अपने एक नॉर्म्स बना लिए हैं और उस नॉर्म्स के आधार पर सारी चीजें होती रहती हैं. अक्रॉस द ग्लोब वुमेन एंड गर्ल्स हैव लोअर स्टेटस. ये इंडिया की ही बात नहीं है, बल्कि आप वर्ल्ड वाइड आप देखिए तो जहां पर महिलाओं की स्थिति बहुत बढ़िया नहीं है. तो हमें अब इसके लिए करना क्या है? करना यह है कि हमें जेंडर सेंसिटाइजेशन प्रोसेस शुरू करनी है. जेंडर सेंसिटाइजेशन मस्ट बी देयर. आप देखिए कि हम कितना अपने लिए खुद सोचते हैं और कितना हमारे काउंटर पार्ट सोचते हैं. कभी आप एक सर्वे करिए जिसमें उनसे आप अपने महिला मित्रों से बातचीत करिए और उनसे पूछिए कि वे कितना अपने लिए टाइम डिवोट करती हैं, कौन कौन से ऐसे कार्य हैं जो वो अपने लिए करती हैं और कौन कौन से ऐसे कार्य हैं जो वो दूसरों के लिए करती हैं, जो अपने परिवार के लिए करती हैं. तो आपको पता चलेगा कि लिस्ट उनकी बहुत लंबी होती है दूसरों के कार्य के लिए, अपने लिए लिस्ट बहुत छोटी होती है. तो पुरुषों का जस्ट डिफरेंट होता है, जस्ट अपोजिट होता है. उनका अपने लिए लंबा लिस्ट होता है और दूसरों के लिए कम लंबा लिस्ट होता है. तो आप देखिए जेंडर सेंसिटाइजेशन, यहाँ पर इनइक्वालिटी दिखाई देती है. सो वी नीड टू मेक अवेयर, सेंसिटाइज आवर जनरेशन. वी नीड टू टॉक अबाउट द इक्वालिटी इन जेंडर इक्वालिटी, and it should start from the family. It should start from the family. परिवार से ही शुरू होता है. परिवार से ही अंडरस्टैंडिंग शुरू होती है कि भाई दोनों बराबर हैं, दोनों के लिए आवश्यकताएं हैं. और मैं आपको एक और बात कह करके अपना लेक्चर समाप्त करना चाहूंगी. आजकल के सिनेरियो में देखिए, जेंडर इक्वालिटी के संदर्भ में यदि बात करें तो मेरी एक चर्चा हो रही थी और एक केस की बात आई. एक लड़के ने आकर के काफी कंप्लेन किया. वो अपने माँ से बहुत नाराज था. नाराज ये था कि दो भाई, एक भाई और एक बहन परिवार में हैं. तो वो उसने कहा कि मेरे साथ डिस्क्रिमिनेशन होता है घर में. माँ मुझे कहती है कि तू अपनी सारी चीजें लेकर के आ जा, और मेरी बहन के लिए वो सारी चीजें मुहैया कराती है, हर चीजें उसको ला करके घर में देती है, उसके लिए सारी सुविधाएं करती है. तो मैं बहुत नाराज हूँ, मुझे बहुत गुस्सा आता है कि मेरी मदर मेरे लिए कुछ नहीं करती है. तो जब ये चर्चा हुई, ही वॉज इन डिप्रेशन, वेरी मच एग्रेशन भी उसको था, मतलब वो अपनी बहन से बहुत चिढ़ने लग गया था. तो ये जब चर्चाएं हो रही थी तो ये बताया गया कि आपका जो सोशल कंस्ट्रक्शन है इस बात की ज्यादा इजाजत नहीं दे रहा है कि वो बाहर जाकर के सारे सामानों को अपनी खुद ले सके. तो माँ उसको मुहैया कराती है. नाउ तब जाकर के उसके दिमाग में ये आया कि साहब ये सारी स्थिति कैसे क्रिएट हो रही है. अब ये जो एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर दिया है वो बात आ रही है सोशल कंस्ट्रक्शन की. तो ये जो सोशल कंस्ट्रक्शन है उसका निर्धारण कौन करता है? वी द मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी. सो वी नीड टू टेक केयर कि भाई नहीं, हमें दोनों को स्पेशल महत्व देते हुए एक बैलेंस बनाना है, जिससे कि हम एक प्रोग्रेसिव सोसाइटी, एक कंट्री का निर्माण कर सकें. थैंक यू वेरी मच.
Thank you so much, ma'am, for such an informative session and gracing this webinar. We feel honored and privileged to have you among us. Thank you so much, ma'am. Thank you so much. I feel privileged to propose a vote of thanks to all the dignitaries and participants who all attended this webinar on gender equality and women rights. First and foremost, I would like to thank our Honorable Vice Chancellor, Professor M.K. Verma, sir, for sparing precious time for us and gracing this webinar with his presence. My words are not enough to thank all on the behalf of whole Chhattisgarh Swami Vivekanand Technical University, Bhilai. I would like to thank Dr. Aruna Palta, ma'am, Honorable Vice Chancellor, Hemchand Yadav University. I would also like to thank Dr. Priyamvada Srivastava, ma'am, Associate Director, Center of Women Studies, Pandit Ravi Shankar Shukla University, Raipur. Last but not the least, I thank all the participants for showing their interest in this webinar and attending this webinar. Thank you very much. Thank you very much.